Good morning, student. Today we are going to start Accountancy Part 2, which is for 20 marks in annual examination. Its first unit is Financial Statement of a Company. First of all, we should know about the financial statement of a company. Then the meaning is financial statement are the result and objective of the entire accounting process. In the case of companies, they represent their capital structure and other assets and liabilities along with the profit and loss statement. Their main use is to communicate the financial information about a company to its stakeholders. Let us learn more about the financial statement of a company. In short, we can say that the financial statements are the statements which are prepared by every company at the account and at the end of accounting period. These are known as income statement, that is profit and loss statement, and balance sheet. Now see the meaning in detail. The financial statement of a company reflects the true picture of its financial performance. They depict not only profit and loss but also asset and liabilities. It is only at the end of all accounting processes that we can generate these statements. Let's take a look at the objective of financial statement. Meaning, financial statements are basically represents that depicts financial and accounting information relating to a business. A company's management uses it to communicate with external stakeholders. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो एक्चुअली फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी बिजनेस एंटिटी की, और जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको मैनेजमेंट एंड अदर थिंग्स के बारे में कम्युनिकेट करते हैं. These stakeholders includes shareholders, tax authorities, regulatory bodies, investors, creditors, etc. These statements include basically the following reports: balance sheet, profit and loss statement, statement of cash flow, and income sheet. Now that we understand the meaning of financial statement, now come on its objectives. Since stakeholders of a company heavily rely on a financial statement to understand its functioning, they portray the true state of affairs of a company. Here are some objectives. These statements show an accurate state of a company's economic assets and liabilities. ये स्टेटमेंट कंपनी की एक्यूरेट इकोनॉमिक स्टेटस बताते हैं, क्या उसके एसेट्स हैं और क्या उसके लायबिलिटीज़ हैं. They help in predicting the extent of a company's capacity to earn profit. प्रेडिक्शन कर सकते हैं किस हद तक कंपनी
इन फ्यूचर और प्रॉफिट अर्न करेगी। Shareholders and investors can use this data to make their financial decisions, जिसको शेयर होल्डर और इन्वेस्टर्स अपना डिसीजन बदलने में हेल्प ले सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया जाए या ना किया जाए। These statements depicts the effectiveness of a company's management. That means how well a company is performing depends on its profitability, which these statements show. ये स्टेटमेंट जो हैं कंपनी की इफेक्टिवनेस को शो करते हैं, कितने बेहतर तरीके से कंपनी अपना काम कर रही है। They even help readers of these statements know the accounting policies used in them. This helps in understanding statement more comprehensively. किस तरह की पॉलिसीज अकाउंटिंग करते वक्त यूज़ की गई हैं उसका भी नॉलेज होता है। These statements also provide information relating to the company's cash flow. Investors and creditors can use this data to predict the company's liquidity and cash requirement. कैश फ्लो के बारे में भी ये स्टेटमेंट हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। कंपनी की लिक्विडिटी क्या है, उसे इन फ्यूचर क्या रिक्वायरमेंट है, ये भी पता चलता है। Finally, they explain the social impact of business. This is because it shows how the company's external factors affect its functioning. सोशल इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस, समाज पर बिजनेस का क्या प्रभाव है। एक्सटर्नल फोर्सेस उसके फंक्शनिंग में किस तरह का इफेक्ट डालते हैं, ये भी हमें नॉलेज मिलता है। Now form and content of balance sheet and its peculiar items. Balance sheets are one of the most important financial statement of a business. They disclose details relating to generally to assets and liabilities. They even show the exact nature of these assets and debts. Let us take a look at the content of balance sheet and its some peculiar items. बैलेंस शीट एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बिजनेस का, जो एसेट और लायबिलिटीज बताता है। किस तरह के एसेट्स और किस तरह के डेट्स कंपनी के अंदर हैं, बिजनेस के अंदर हैं, ये पता चलता है। आइए देखें इसके कुछ कंटेंट्स। A balance sheet contains two parts. One side shows assets while the contents detail of liabilities. Other content is liabilities. Every balance sheet of companies has to be prepared to consonance with revised schedule of Companies Act 1956. जो शेड्यूल 6 है कंपनीज एक्ट 1956 की, उसका जो रिवीजन हुआ है 2013 में, उसी के हिसाब से कंपनी की बैलेंस शीट बनाई जाती है। शेड्यूल 6 also contains many other disclosure requirements. Balance sheet and statement of profit and loss must reflect them as well. The format of these should be the same as that of the
शेड्यूल प्रोविज़न। देखिए इसका फॉर्मेट किस तरह से है। ये वर्टिकल फॉर्म में बनती है। फर्स्ट लायबिलिटीज़ की एंट्री होती है, देन एसेट्स की एंट्री होती है। टॉप से हेडिंग पढ़ना शुरू करता हूँ। टॉप पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, देन शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी के डिफरेंट रिजर्व्स एंड सरप्लस। प्रॉफिट एंड लॉस को सरप्लस बोलते हैं। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, यदि कंपनी किसी को टोटल शेयर अलॉट नहीं करती है तो फ्रैक्शन में शेयर वारंट अलॉट किए जाते हैं। तो फ्रैक्शन के शेयर वारंट का अमाउंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यदि कंपनी ने एप्लीकेशन प्रेजेंट ईयर में मांगी है, सपोज मंथ ऑफ फरवरी, और अलॉटमेंट उसका अप्रैल में होना है, तो इस तरह के अमाउंट को इस हेडिंग में लिखा जाएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। देन नेक्स्ट हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, यदि रीअसेसमेंट के बाद टैक्स की लायबिलिटीज बढ़ती है तो वो इसके अंदर आएगी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज विच आर नॉट स्पेसिफाइड बाय देयर नेम। लॉन्ग टर्म provisions for a period of more than 1 year. Then fourth heading, current liabilities. Current liabilities are the liabilities which are payable within 1 year. इसके अंदर है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, एक साल के अंदर क्या देना है। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स इंक्लूड creditors and bills payables. Other current liabilities which are not specified by their name. Short-term provisions which are meant for 1 year. यहां पर आके लायबिलिटीज का टोटल लगा देंगे। देन सेकेंड मेजर हेडिंग आएगी एसेट्स। एसेट्स में नॉन करंट एसेट यानी लॉन्ग टर्म एसेट, इसके अंदर फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के अंदर टेंजेबल एसेट्स विच कैन बी सीन और टच लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। intangible assets which cannot be seen or touched like goodwill, patents written off, etc. Capital work in progress, the structures which are under development known as capital work in progress. जैसे बिल्डिंग बन रही है तो उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में रखेंगे। जब बन जाएगी तो वो फिक्स्ड एसेट में बिल्डिंग के नाम से आ जाएगी।
इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जैसे किसी पेटेंट्स या कॉपीराइट का वर्क चल रहा हो, वो इसके अंदर आएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी इन अदर कंपनीज। डिफर्ड टैक्स एसेट after reassessment if the tax paid is less than the already paid amount. Tax payable is less than the amount paid already for tax. Then the difference will come under this head, deferred tax asset. Long-term loans and advances provided by the company to other companies. Other non-current assets which are not specified by their name. Then current assets. Current assets are assets which are converted into cash within 1 year. इसके अंदर आएंगे करंट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर कैश कर लिया जाएगा। इन्वेंटरीज, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, इट इंक्लूड्स डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, that is cash and equivalent to cash which can be converted into cash within fraction of time. Short-term loans and advances provided by the company to other companies for a short period. And other current assets which are not specified by their name. इसके बाद इसका भी टोटल लगा दिया जाएगा। एसेट लायबिलिटीज का टोटल इक्वल आएगा, क्योंकि you know that all assets are equal to liabilities plus capital. तो ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट था। इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। आप बार बार देखिए इसको और कोशिश कीजिए याद रखने की। नाउ कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट एंड इट्स पेक्यूलर आइटम्स। इसी बैलेंस शीट के जो कंटेंट्स हैं उनको और डिटेल में जानते हैं। शेयरहोल्डर फंड। According to Schedule 6 of a balance sheet, must sub-classify shareholder fund as follows. शेयरहोल्डर फंड में क्या क्या इंक्लूड रहता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ऊपर बैलेंस शीट में इन तीनों का नाम लिया था। शेयर कैपिटल। The notes to account in a balance sheet must be state detail pertaining to share capital. शेयर कैपिटल कई तरह का होता है, लेकिन जो कॉल्ड अप एंड पेड अप अमाउंट होगा वही बैलेंस शीट में लिया जाता है। तो नोट्स टू अकाउंट में डिटेल में आप पूरा शेयर के बारे में लिखेंगे, क्या ऑथराइज्ड है, क्या इशूड है, क्या सब्सक्राइब्ड है, क्या कॉल्ड अप है, क्या पेड अप है। They must also include the following particular items and modification. Disclosure of each class of share must state the number of share. कितने शेयर हैं। They must also disclose restrictions on distribution of dividend and payment of capital. डिविडेंड कितना दिया जाएगा। Further, to clarify the identities of promoters of a company, the notes to account must show detail pertaining to certain class of shareholder. कई बार प्रमोटर भी शेयर होल्डर हो जाते हैं, तो इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन।
Detail of authorized share, paid up capital per value of share, the aggregate value of share allotted to each class of shareholder, etc. must be stated separately in accounts, notes to accounts. सारी बातें क्लियरली बताएंगे, क्या ऑथराइज्ड कैपिटल है, क्या पेड अप कैपिटल है, पर वैल्यू शेयर की क्या है, एग्रीड वैल्यू ऑफ शेयर की क्या है, किस क्लास को कितने शेयर अलॉट किए गए हैं। Accountant also have to disclose the number of forfeited share यानी शेयर कैंसिलेशन। जो डिफॉल्टर्स होते हैं उनसे शेयर वापस ले लिए जाते हैं, उसे शेयर फॉरफीचर कहते हैं। तो वो भी यदि है तो उसकी टर्म्स और कंडीशन। और एक्स्ट्रा भी है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, नंबर ऑफ शेयर, बायबैक एटसेट्रा। रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग आया था। एवरी बैलेंस शीट हैज टू क्लासिफाई ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस फंड्स ऑफ अ कंपनी अंडर फॉलोइंग कैटेगरीज। रिजर्व कितने तरह के होते हैं, कुछ आपको दिए गए हैं। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फॉर पेमेंट ऑफ कैपिटल, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फॉर पेमेंट ऑफ डिवेंचर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड ओवर शेयर्स और डिवेंचर्स, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट अलाउएबल टू एम्प्लॉइज। जब एम्प्लॉइज़ को डिस्काउंट पर शेयर देने होते हैं तो इसके लिए शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट का रिजर्व बनाया जाता है, वही है ये। रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज से यदि कोई गेन होता है तो वो रीवैल्यूएशन रिजर्व में आएगा। सरप्लस फंड्स लाइक द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिविडेंड, बोनस शेयर एटसेट्रा। सरप्लस के अंदर सभी तरह के प्रॉफिट आ जाएंगे। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, द बैलेंस शीट मस्ट डिस्क्लोज ऑल मनी रिसीव्ड फ्रॉम शेयर वारंट एज ए सेपरेट लाइन अंडर शेयर होल्डर फंड्स। आपको बता दिया था यदि फ्रैक्शन में शेयर इश्यू होते हैं तो उसके अगेंस्ट वारंट इशू होता है और उसके अगेंस्ट जो अमाउंट मिलेगा वो इस हेडिंग में आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एंड नॉन करंट आइटम, all assets, liabilities and other peculiar items have to be categorized as either current or non-current. Current means for 1 year, non-current more than 1 year. This classification is necessary because it helps in understanding these items comprehensively. क्लासिफिकेशन ज़रूरी भी है क्योंकि यदि नहीं होगा तो आप कैसे समझ पाएंगे कि कौन करंट है कौन नॉन करंट है। Current items are basically those that have a shorter value of utilization period. Thus they are realizable within 12 months, जैसे आपको बताया साल भर के अंदर। They are tradable, they are cash or cash equivalent, etc. On the contrary, all other assets and liabilities are non-current. इसके अलावा जो साल भर से अधिक के लिए है, जो साल भर के लिए नहीं है, 12 महीने से अधिक वाले सभी नॉन करंट होंगे। 12 महीने से अधिक वाले सभी नॉन करंट होंगे। Liabilities, balance sheet shows liabilities along with details of share capital and equity. As we read above, liabilities can be current or non-current. Current liabilities are basically those which are payable within 12 months. जिनका पेमेंट आपको साल भर के अंदर करना है वो करंट लायबिलिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड पेबल्स,
creditors, bills payable, both included in trade payables. Concurrently, those that we payable after a year, एक साल के बाद जिनका पेमेंट करेंगे, are non-current or long-term liabilities. Thus, bank loan are generally non-current debt. Fixed assets. Asset side आ गया. Balance sheet always depict all assets below detail of equity and liabilities. First, fixed assets are described, then the current assets. Fixed assets are nothing but non-current asset. Thus, their useful life extend beyond 12 months. जो एसेट्स साल भर से ज़्यादा के लिए उपयोग किए जाएंगे, कई वर्षों के लिए उपयोग किए जाएंगे, वो फिक्स्ड एसेट होंगे. Fixed asset includes both tangible as well as intangible asset. Apart from these assets, all other assets are current assets, जिनका उपयोग एक साल से ज़्यादा के लिए नहीं है, एक साल से कम के लिए है, वो सभी करंट एसेट्स होंगे. Investments. Even investments of a company are assets because that is the amount invested by the company into other company. Furthermore, they can also be current or non-current. Investment realizable within 12 months are current investment, while which are realizable more after 1 year or more than 1 year are non-current investment. Cash and cash equivalent. All cash funds and cash equivalents item of a company are treated as a current assets. Balance sheet always have to show them separately. All these rules generally have to be followed strictly in a balance sheet. Apart from these, accountants have also to show other peculiar items like trade payables, trade receivable, inventories, provisions, etc. Type of financial statement. Financial statements play a huge role in accounting. Various stakeholders are then for their several purposes. They are most commonly used for understanding the financial performance of a business. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही वो हैं जिससे सारे लोग जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं जान सकते हैं कि बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या उसकी प्रोग्रेस है. Financial statements are of two types: balance sheet and statement of profit and loss account. Apart from these two accounts, accountants also create some other reports to understand the movement of funds. For example, cash flow statement, which shows the liquidity of the business. Balance sheet. A balance sheet is basically an accurate representation of assets and liabilities of a business. They contain all detail pertaining to a long-term and short-term assets, debts, and capital of a firm. It is one of the most important tools stakeholders use to understand a particular business. किसी भी बिजनेस को समझने के लिए बैलेंस शीट एक
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल होता है, जिसके द्वारा उससे जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग तरह तरह की जानकारी पा सकते हैं। Every company has to annually prepare and present a balance sheet according to a revised schedule of a Companies Act 1956. Companies generally cannot deviate from its format. जैसे दिया है वैसे ही लिया जाता है, उसमें चेंज नहीं कर सकते। Apart from them, they have to follow the relevant accounting standard of ICAI. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो दिए गए हैं वो भी फॉलो करना होंगे। ऊपर आप देख ही चुके हैं कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट, फिर से बताया जा रहा है। शेयर कैपिटल, this share capital should be explained in a notes to accounts. Further, they include the following modification: all rights, preference and restrictions associated with each class of share have to be specified. A specific disclosure pertaining to the identity of certain shareholders. Detail regarding the number of shares issued, subscribed, paid up, reserved and bought back. यानी शेयर से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको नोट्स टू अकाउंट में देनी होगी, और जो फाइनली अमाउंट नोट्स टू अकाउंट में आएगा उसी को आप बैलेंस शीट में ले जाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस, ऊपर भी आपको टाइप बताए थे, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सरप्लस फंड्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस। करंट एंड नॉन करंट एसेट ऊपर बता ही चुका हूँ आपको। कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 months इज अ करंट एसेट, and assets those provide a benefit over a long period, that is more than 12 months, is known as non-current asset. Borrowings also divided in two parts: long-term borrowings, short-term borrowings, which are payable within 12 months, or short-term borrowings which are payable after 12 months or after a year, or long-term borrowings. Investment also categorized in short-term investment, long-term investment, which are converted into cash within 12 months, or short-term investment, which are convertible after 12 months or 7 years, or long-term investment or non-current investment. A statement of profit and loss. Apart from the balance sheet, a statement of profit and loss account is the second important financial statement. It's basically show revenues and expenses of a business. Revenues, income, and expenditure, expenses. Deduction of tax from this depicts the final profit or loss amount. The format of a profit and loss account is also given in Schedule 6 of Companies Act 1956. Contents are as follows: revenue from operation, that is sales, including sales and other operating revenue
Furthermore, finance companies have to state revenue from interest, dividend and other services. यानी जो कंपनी जिस तरह का काम करती हो वही उसके रेवेन्यू का मेन सोर्स होगा. Other income include income from interest, dividend, non-operating income and income from sale of investment. इस तरह से इन दोनों का सम कर लेंगे तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा. उसके बाद एक्सपेंसेस लेने हैं, इंक्लूडिंग कास्ट ऑफ मटेरियल, स्टॉक एंड ट्रेड, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉइज बेनिफिट एंड अदर एक्सपेंसेस. सारे तरह के एक्सपेंसेस ले लेंगे, इनका टोटल लगा लेंगे, टोटल एक्सपेंस आ जाएगा. टोटल एक्सपेंसेस को टोटल इनकम से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा. प्रॉफिट बिफोर टैक्स को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा. Treatment of these three items will finally result a statement of profit and loss account. Also have to be deduct tax and extraordinary item from the profit to ascertain the final profit and loss account of the company. तो यहाँ पर आके हमारी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के आइटम्स और उनके कंपोनेंट्स कंप्लीट होते हैं. चैप्टर अभी कंटिन्यू है. बचा हुआ चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन किया जाएगा. ओके, थैंक यू.